Good morning, students. I hope you all are doing well at your places. And today we'll be studying about verbs. Verbs क्या होती है? क्रिया. Action doing words are known as verbs. So let's just. Title of our chapter is verbs. We all know a verb denotes an action, or you can say possession or being, right? And verb is the basically the here of the sentence, right? What is this here of the sentence? Sentence की आवाज. May tells us that what a person or thing does, कि लोग क्या करते हैं, what is done to that person or thing, and the state in which the person or thing is, right? So what a person or thing is and what a person or thing has, क्या है उनके पास, no sentence can be formed. कोई भी ऐसा sentence नहीं बन सकता without a verb, right? So she runs every morning before work. काम से पहले वो बहुत जल्दी जल्दी इधर उधर होती है. This is an action. Right. The mountains are the breathtaking sights. This is a being verb, right? Our school has a tennis court. एक tennis court है और एक बड़ा सा big सा playground है. This is a possession, right? Now, what are transitive and intransitive verb? देखिए, what is verb? Verb होती है क्रिया, सकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया, kind of this transitive and intransitive, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, right? Now, ऐसा वर्ब जिसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा, जिस वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव बोलेंगे. जैसे दे बॉट सम वेजिटेबल्स, कुछ वेजिटेबल्स लेके आए. द कैट चेज द माइस, राइट? अ वर्ब दैट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, जिसमें वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता, उसको हम क्या बोलते हैं? को हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब. और उसका जो मीनिंग होता है, उसके मीनिंग में ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है, बट इट हैज अ कंप्लीट मीनिंग, और इसीलिए उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं. जैसे द रेस बिगिन एंड द रैबिट इज गोइंग इनटू इट्स बरो. रैबिट जो है बरो में जा रही है, राइट? नेक्स्ट इज वर्ब ऑफ द इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. ये क्या होते हैं? वर्ब्स दैट नीड अदर वर्ड्स. कुछ वर्ब होते हैं जिनको दूसरे वर्ड चाहिए होते हैं जिससे कि वो अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर पाए. इन्हीं को हम बोलते हैं, दे आर नोन एज इनकम्प्लीट वर्ब्स. और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट वर्ब होते हैं. verbs is, are, am, was, were, will be, shall be, etc. They may appear and seems to be incomplete verbs, right? So these words, they needed to be added, and it is known as the complement of the verb. देखिए complement में e आया हुआ है, that completed. अगर इसी e में, ये वाले e में I आ जाता तो complement means आप किसी को compliment कर रहे हैं, that you are looking beautiful, you are looking just okay, you are looking absolutely marvelous, right? The only way is to start all over again. यही भैया, किसी चीज को नई से शुरुआत करनी चाहिए. कृष्ण, किंग कृष्ण देवर राय, ही वॉज वेरी वाइज. वाइज मीन्स बुद्धिमान. मूविंग ऑन टू दिस एक्सरसाइजेस, यू हैव टू कंप्लीट. इन दिस यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई कि कौन सा ट्रांजिटिव है, कौन सा इंट्रांजिटिव नहीं है. ऑलरेडी टोल्ड यू, जहां ऑब्जेक्ट है ट्रांजिटिव, जहां ऑब्जेक्ट नहीं है इंट्रांजिटिव, राइट? नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है, नाउन और प्रोनाउन होता है, that directly receives an action which is indicated by a verb. कि मतलब डायरेक्टली एक्शन को रिसीव कर लिया, whereas इनडायरेक्ट में नाउन और प्रोनाउन है. दैट जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे क्या हो जाता है? इफेक्ट हो जाता है. जैसे कि द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉर्मली प्लेस्ड बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. देखिए, दे बिल्ड अ हाउस फॉर, उन्होंने ये घर बनाया है उसके लिए. देखिए, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? घर है. लेकिन घर क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, भाई उसके लिए बनाया. आर कैट कॉट अ माउस, हमारी ये बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया है. तो माउस क्या है? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्टली वो अटैक कर रहे हैं उस पे. और हमारी कैट जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, right? On behalf of this, again, you have to complete these exercises on your own. Moving on to ditransitive verbs. देखिए, this is a very new topic that I am also seeing for the very first time, that what is ditransitive. But name से पता चल रहा है कि दो हैं, right? ऐसा ditransitive, a transitive verb need two objects and it is known as ditransitive. देखिए, जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट होंगे वो ditransitive हो जाएगा, जिसके अंदर तीन ऑब्जेक्ट होंगे दिस इज ट्राई transitive, right? Next is Anisha told me a crazy story the other day. Other day में उसने मेरे को क्या बताई? crazy story बताई. इस sentence में जो verb है वो क्या है? Ditransitive verb है, because crazy story is the direct object whereas me is the indirect object, right? नेक्स्ट इज ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब्स. ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं. वर्ब्स दो टाइप के होते हैं, राइट? देखिए, मेन वर्ब बेस्ड फॉर्म होता है वर्ब का, वी ऑल नो. प्रिंसिपल वर्ब होता है जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस. जैसे कि फ्लाई, ग्रो, ईट, ड्रिंक, प्रिपेयर, रन, वॉक, स्लीप, गो, गिव, टीच, टेक, राइट? these are all the examples of main verb. जैसे कि he plays football in the garden, में फुटबॉल खेलते हैं. she has been dancing for 2 hours, right?
नेक्स्ट इज द वर्ब विच इज यूज विद द मेन वर्ब के साथ यूज होती है, उसका टेंस जानने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी। इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, बी, हैव, डू, मे, माइट, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मस्ट, ऑट, यूज टू, ऑट टू, ये सब देखिए, ये टू साथ में जो लगे हुए हैं ये क्या है, prepositions है। All the other verbs in this category, they are known as main verbs. Next is to, be, do, and have. They are the primary auxiliary verbs, and they can be used both main as well as auxiliary. Examples देखिए अब आप, be जो होता है is, are, and was, were, ये हमें पता है, और आप इसे प्लीज अपनी नोटबुक में सबसे आगे एक फ्रंट पेज पे आप ये लिख लीजिए। डू फॉर्म कैन बी यूज्ड, डू, डज, डिड। प्लीज जस्ट मेक अ नोट। आप जो कलर्ड नोट्स आते हैं नोट पेपर, उसके अंदर लिख के इसको प्लीज आगे स्टिक करिए। हैव फॉर्म क्या होती है, हैज, हैव, हैज, हैव, हैड, विल हैव, shall have, right? ना देखिए अभी एग्जांपल दिया हुआ है दैट निया इज अ वेरी हार्ड वर्किंग, सो इज क्या है, इज द मेन वर्ब। निया इज राइटिंग एन ईमेल टू अवर मैनेजर, यहाँ पे इज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि यहाँ पे वो मदद कर रहा है, राइट? कृष्णा हैज अ लार्ज कॉफी स्टेन ऑन हिज शर्ट, उसके शर्ट पे क्या है, कॉफी का स्टेन है, दिस इज द मेन वर्ब। एंड कृष्णा हैज बॉट अ न्यू शर्ट, एक नया शर्ट लेकर आए हैं, और यहाँ पे हैज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। तो रेस्ट ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज, एंड बेसिकली क्या डिस्क्राइब करते हैं, दे आर यूज विद द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस द डिफरेंट डिफरेंट मूड्स, जैसे कि परमिशन, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब किसी चीज को रोकना, जैसे स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन दिस एरिया, राइट? ऑब्लिगेशन मीन्स आप किसी पे चार्ज लगा रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, और उसकी एबिलिटी, एबल का एबिलिटी, दिस इज एन एडजेक्टिव, राइट? नेक्स्ट इज मे वी गो होम नाउ, क्या हम जा सकते हैं, दिस इज द परमिशन। आई हैव टू रिटर्न द बुक नाउ, ये ऑब्लिगेशन है कि भाई मुझे आज ये किताब वापस करनी है। ऑन बिहाफ ऑफ दिस यू हैव टू कंप्लीट दीज एक्सरसाइजेस, right? Moving on to finite and non-finite verbs. Finite, we all know the finite verb के पास क्या होता है, tense होता है, and it changes its form according to the subject in number and of course the person. जैसे कि he goes to school daily, वो रोज जाता है, I go to gym every day, we swam in the river for 3 hours. This is not swam, this is swam. Please correct this. Non-finite verb वो होती है that does not change its form according to the subject of the sentence. जैसे कि the dancing floor is shining, she is looking at me, या फिर she is angry, she used to bake a cake for orders, right? This sentence के पास एक finite verb है, और a non-finite verb is necessary as it is used to express the meaning of the sentence. Then again, on behalf of this, you have to complete this exercise. Now moving on to this, that is the form of verb or verb के बारे में हम पढ़ेंगे। वीक वर्ब्स क्या होती है, वीक वर्ब्स दे आर दोज वर्ब्स which form their past tense, जिनके past tense बना देते हैं हम ed, और you can say t ऐड करके, जैसे burn का burned, learn का learned, right? deceive का deceive, sue का sued, right? Next is strong verbs, वो होती हैं जो कि past tense बनाती हैं by changing the inside vowels of their past tense, जैसे know का knew, drive का drove, see का saw, forgive का forgave, right? नेक्स्ट इज कुछ वर्ब में इनसाइड वॉवल जो होता है इट इज चेंज इनटू द पास्ट, जैसे कि फाइनली फिर हम डी और टी ऐड कर देते हैं। सच वर्ब्स को भी कैटेगराइज करा जाता है किसमें, वीक फॉर्म्स में, जैसे कि कैच का कॉट, ब्रिंग का बॉट, टेल का टोल्ड, बाय का बॉट, राइट? नाउ सिंपल वे ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग वर्ब और अ वीक वर्ब इज दैट कि आप इफ इट अगर फाइनल में आप डी और टी ऐड कर दें, देन इट इज एडेड टू द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको हम क्या बोलेंगे, जो कि प्रेजेंट फॉर्म में नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, वीक फॉर्म बोलेंगे। जैसे कि देखिए एक्वायर का एक्वायर्ड एंड एक्वायर्ड, हियर का हर्ड और हर्ड अगेन, इम्प्लाई का इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड, जस्टिफाई का जस्टिफाइड एंड जस्टिफाइड। नेक्स्ट इज कीप का केप्ट एंड केप्ट, नील का मतलब नीचे बैठना, नेल्ट एंड नेल्ट, निट का निटेड एंड निटेड, लैंड का लैंडेड एंड लैंडेड, लॉट का सॉरी दिस इज कट, दिस इज लाफ, ये टी नहीं आएगा यहाँ, दिस इज लाफ एंड लाव्ड, ले का लेड एंड लेड, लीड का लेड लेड, लीन का लर्न, इट्स लीन्ड, और लर्न मतलब इट्स जस्ट लीन्ड ही आएगा दोनों में। लीप का लेफ्ट एंड ऑफ कोर्स दिस लीप, लर्न का लर्नड भी होता है और लर्नड भी होता है, लीव का लेफ्ट लेफ्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लेंड का लेंट एंड लेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ ऑन दिस, agree का agreed and agreed, bend का bent and of course it's bent, bring का bought and brought, right? Next is build का built and built, very important,
Please mark it important whichever I'm telling you, because most of these students, they make a mistake in making the past form of this, right? Catch ka caught and caught, creep ka crept and crept, and deal ka dealt and dealt, die ka died, and of course it's died. Dive ka dived and dived, dwell. What do you mean by dwell? Dwell means to live. Please write down its meaning. Very important word which you will definitely, I'm like 1000% sure you will see this word in your reading comprehension somewhere, right? Favor ka favored and favored, felt ka feel ka felt and felt. Flee means उड़ जाना, आजाद कर देना. Fled and fled. Gather का it's gathered and gathered, right? Next is again more this happy happen का happen and happened. Vote का voted and voted. Make का made and made. Please mark this important. Mean का meant and meant. Meet का met or met. Mark this also important. Melt का melted and melted. Note का again आपने ed लगा दिया है यहाँ पे भी. Open में भी similarly opened and opened. Tame, tamed. टेम का मतलब क्या होता है, जो थोड़ा पर्सनालिटी में थोड़ा डल होता है. टीच का टॉट एंड टॉट, आप इतना ध्यान रखिए, टीच के लिए टॉट है और टॉट है. ब्रिंग का भी बॉट है और ब्रॉट है, राइट. थिंक का थॉट एंड थॉट. अनफरल अनफर्ल्ड, राइट. वॉश में अगेन ईडी एंड वीप का वेप्ट एंड वेप. नेक्स्ट ओवर हियर इन दिस टेबल, इट्स the next one is it's like a light and light. Lost ka lose ka lost lost, very important, mark it as important. मैनेज का मैनेज एंड मैनेज. स्लीप का स्लेप्ट एंड स्लेप्ट. सो का सोड, राइट. स्पेंड का स्पेंट एंड स्पेंड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेयर स्टेयर्ड एंड स्वीप का स्वेप्ट स्वेप्ट. पे का पेड. परमिट का परमिटेड. सेम बोथ फॉर दैट. टाई में भी टाइड ही रहेगा. रेस में भी ईडी लगा दिया जाएगा. रेट में भी ईडी और वर्क में भी वर्क. ये बहुत आसान है, राइट. Now, next over here is arise ka rose and arisen. Again, please mark it very important because this is seen बहुत जगह दिखता है ये. Bear का bore and born. What do you mean by this born? Born means to carry. और ये वाला born का मतलब क्या है? कोई चीज, कोई बेबी पैदा होना, right? Choose का chose and chosen. Again, mark it most important because we usually do these kinds of mistakes. हम लोग उनके past tense में भी double o लगा देते हैं, जो कि गलत है, right? डिग का डग एंड डग. ड्रिंक का ड्रैंक, बहुत आसान है. फेल का फॉल का फेल एंड फॉलन. प्लीज अगेन मार्क दिस इम्पोर्टेंट. फ्रीज का फ्रोजन फ्रोजन. गो का वेंट गॉन, इम्पोर्टेंट, मार्क करिए इसे भी. हिड का हाइड एंड हिडन. मीट का मेट एंड मेट. सिमिलरली फॉर दिस we'll be studying arise awake, arise awoke and awoken. Blow का blew blow, blow blew blown, right. Come का came come, very important. When you write your question answers, why did he come here? When we used to write the answer, he came here. ऐसा लिखते हैं ना हम लोग अपने आंसर्स में. ड्रॉ का ड्रू और ड्रॉन. ईट का एट एंड एटन. अगेन मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट. Whatever sentences, whatever words I'm telling you, please mark it important. They are the most important ones, right? Because ये वो हैं जहाँ पे आप गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं. Forget का forgot और forgotten. Again give का gave and given. Mark it important. कि वो हैं जो हम लोग के डेली वर्ड्स में यूज होते हैं. अगर एक बार आपने यू हैव अ गुड कमांड ओवर दिस ना, you will definitely be able to make the past in the sentence while writing your answers, because you must have seen while your teachers are making you write the question answers, your question is always in present tense, whereas your answer is always in past tense, right. Grow ka grew grow. Hold ka held or held. And ride ka rode and ridden. Next is, और भी आ चुकी है. Rise का rose and risen. Then it's see ka saw seen. Please mark it important, very important. Shine ka shone and shone. Stand ka stood stood. Swim ka swam or swum. And wind ka wound and wound. And ring ka rung and rung. Over here to this table, ran ka run and run. Very important. Shake का shook and shaken. Spring का sprang and sprung. Spring का stung and stung. Sting मतलब जो हनी बीज होती है वो हमें स्टिंग कर देती हैं. Weave का wove और woven. Withdraw means चीजों को बाहर निकाल लेना. Write, wrote, written. Please mark it important, this one also. Next is कुछ ऐसे verbs होते हैं जो अपने change नहीं करते हैं तीनों forms में, जैसे कि bet, cut, put, bid, hit, cast, hurt, let, shut, spread, set, thirst, cost, upset, read, pulled and split, right. Now there are some confusing verbs, जैसे कि आप bear का देखिए, bore है और born है.
I have already told you born means to give birth and born means to carry and explained you in the above, right? So they are born to rule means they birth है ये हमारा, and the cross was born by Jesus as walk to the hill. So I already told you this born means to carry, right? कुछ और verbs हैं hang और hanged. Hang का hung होता है और hung होता है, और इस hang का hanged और hanged होता है. देखिए hang मतलब किसी को फांसी में टांग देना, to put to death by tying a rope over it around its neck, और hung means उसको suspend कर देना, right? लटकाना नहीं होता है hung का मतलब. Her hair hung down her back means to suspend, right? Whereas the Salim witches, they were not burned, उनको burn नहीं किया गया था, they were hanged, उनको फांसी लगा दी गई थी, right? कुछ fell, देखिए ये वही verbs हैं that I have made you mark important. देखिए fell का fall, fell and fallen. I have already marked these verbs important in your above table, right? The cyclist collided with a car के साथ collide किया और नीचे गिर गया. So the fell is the past tense of the form fall, and fell is used as in the present tense to make it a cause that is something to fall. Fell, felled, and felled, right? Next is a great number of trees they were felled to provide space for grazing. Next is lie, like a laid or lane. Lane means to rest. ये सब इस lie का मतलब है आप आराम से हमारे घर में lie करिए, और इस lie का मतलब है झूठ बोलना. Yes, to speak falsely. जैसे कि clothes they laid where he did left them, जहाँ पे वो छोड़ के गया था वहीं पे रह गए. He lied about the price के बारे में वो झूठ बोल रहा था, right? So lay is the past tense of the verb, and verb lie का past tense है lay, or when it is used as the present form then it basically means to place something. Lay का laid and laid means to place something. Next is he laid a towel on the एक चेयर के ऊपर उसने टाल छोड़ दिया. ले द फैब्रिक केयरफुली ऑन द टेबल पे आप आराम से उसको रख दीजिए. दैट इज टू प्लेस. देखिए राइज का रोज एंड राइज इन मीन्स टू कम अप. रेज का मतलब किसी को लिफ्ट करना, मतलब किसी को ऊपर उठा देना. वी वॉच द सन राइज ओवर द बे. बे मीन्स एक कोई भी आप किनारा, मीन्स ऊपर आ गया. द स्टूडेंट्स विल राइज टू वेलकम दी चीफ गेस्ट. दिस इज दे गेट अप, वो लोग उठे. एंड ही रेज्ड हिज हेड एंड जस्ट लुक्ड अराउंड, उसको ऊपर करके ऐसा देखा. Next is see, saw, seen. I have already told you this is one most important. She was surprised when she saw the ghost. जब उसने ghost को देखा, she was totally surprised. Saw is the past form of the verb see. We all know when it is used in the present tense में use होता है that it means to cut wood. Saw, sawed, and sawn. Right. Then the woodcutter sawed the log of the wood. On behalf of this, you have to complete these exercises. So that was all about verbs. Please go through it. This is a very important chapter where you have to learn all these 3 4 tables that we have studied, and whatever the forms of verb that I have made you mark important one, please write down separately and learn them by heart, because they are usually used in your day to day life if you have a good habit of reading. And please keep reading each day and stay blessed. Thank you.